हेलो गाइस, मैं हूं इंद्रजीत और आपको बहुत बहुत स्वागत है द रोबोमाइंड यूट्यूब चैनल में। तो आज हम TDA8946 ऑडियो IC का यूज़ करके एक पावरफुल स्टीरियो एम्पलीफायर बनाऊंगा जिसका पावर चैनल आउटपुट होगा 15+15 वाट। तो चलिए इसे बनाने से पहले हम देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें कौन सा सामान की आवश्यकता होगी। तो मैं यहाँ पे 20 वाट का दोनों स्पीकर लूँगा इसे टेस्ट करने के लिए। ये काफ़ी बढ़िया स्पीकर है 20 वाट का। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. हमारा ये डिवाइस अब पूरी तरह से बन के कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसके साथ 20 वाट का 2 स्पीकर कनेक्ट कर चुका हूँ। अब हम इसमें एक ब्लूटूथ मॉड्यूल फिट करूँगा। ये रहा हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल, इसे कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसमें एक बढ़िया सा NCS सॉन्ग प्ले करूँगा।